जीवन में सबसे कठिन काम में से एक सही निर्णय लेना भी है और ये सही निर्णय लेना आसान काम नहीं है। कई बार हम गलत कर बैठते हैं। सही निर्णय हमें जीवन देता है, लेकिन गलत निर्णय हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन आखिर ये सही निर्णय है क्या? सही निर्णय ये है कि परमेश्वर की भय मानना, कि अपने पाप को स्वीकार कर लेना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेना और उनके पीछे चलना। और इस जीवन की यात्रा में हम सही मार्ग और रास्ता में कैसे चल सकते हैं? बाइबल की वचन हमें बताती है, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम इस नीति वचन से हम समझ पाते हैं कि अगर हम परमेश्वर की बातों पर, उनकी वचनों पर स्मरण करेंगे और उनके अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए सही मार्ग और रास्ता निकालेगा। परमेश्वर हमारे लिए निर्णय लेगा, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता को निकालेगा। आज ज़रूरी ये है कि क्या हम परमेश्वर की बातों पर और उनके वचन पर स्मरण कर रहे हैं, उनके अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनके कहे हुए बातों पर हम चल रहे हैं। आज हम अपने आप को सवाल करें, अगर नहीं है, आज से चलना शुरू करें और परमेश्वर हमारे लिए सही मार्ग और रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। Taking the right decision is one of the most important and difficult things to do in our life. Yes, it is not easy to take the right decision. Taking the right decision will lead us to life, but wrong decision will lead us to death. What is this right decision? The right decision is accepting our sin, accepting Jesus as our personal Savior, trusting in Him alone, and following His way. And in this journey of life, how can we take the right path? How can we take the right decision? The Bible says, seek His will in all you do and He will show you the right path to take. So with this verse, we can understand that it is our responsibility to seek His will, live according to Him, and follow His ways. And when we do all these things, God will show us the right path, the right decision, the right directions of our life. So the important question is, are we really seeking God? Are we really following Christ? Are we obeying Him? Are we living according to Him? If not, let us start from today. Let us start reading the Bible. Let us start living life according to Him. And when we do all these things, God will show us the right path, the right directions of our life. God bless you.